is CRC, and 250,000 tons GI, which is galvanized. We have offices all over Pakistan. But coming to our presentation. The year that we are discussing today, the HRC prices sort of continued their decline. We started off the year with around 560 FOB China, and by the end of the year, it reached 535 and continued to come down in the first quarter of the current financial year, reaching 475. So whenever there is a drop in HRC prices, because most of this is imported from outside, and there's a lag of about 3 to 4 months. So we are always under pressure when we have a declining trend of HRC. Since then, prices have stabilized, and in fact, they've started to improve a little bit, primarily due to expectation of a stimulus in China, and now anticipation that steel demand in America may increase following Trump re-election. At local front, the year remained challenging, both because of political and economical uncertainties. There was some improvement in demand of flat steel. The requirement in terms of tonnage improved. Unfortunately, the local producers could not get a due share of that, primarily due to very heavy imports from China. Main reason being sale tax-free import allowed to Fata Fata. That really hurts because at the price level we currently have, sale tax exemption is of the order of 50,000 rupees, which I think is very difficult to compete against. We have sort of taken up the issue of Fata Fata with the government, tried at every level, were promised that this will not continue, but somehow political pressure prevailed, and the Fata Fata sale tax-free imports will continue for another year. However, there was slight change in the policy implemented by FBR. When the material comes in, previously Fata Fata importers were submitting post-dated check, which has no stakes in it. So FBR has now mandated requirement of pre-order of an amount equal to the sale tax realization, so that if they take the material out, consume it, they have to come back and report where that material went. So that is sort of hindering so far pre-import from Fata Fata region. But another thing that has been quite prevalent in the previous financial year and continues to today, there's a lot of misdeclaration at the import stage. People importing Galileo declare it as some other material, and zinc-coated materials are imported in the garb of other alloying elements so that they can avoid anti-dumping. We have moved our case of duty circumvention and have approached the NTC to make sure that misdeclaration does not allow import of GI under the garb of materials which are exempted from anti-dumping. To put it in perspective in terms of tons, around 150,000 tons were imported through this channel, and instead of being used in the Fata Fata region, was sold all over Pakistan. What that does, it brings down the prices
And in a market that HRC is continuously declining, uh, the sale price is very, very challenging in presence of this GI imported under FATA region or cleared without paying anti-dumping duty. So both these uh, misuses have been quite problematic for the local producers. So we hope that NTC takes up this case on urgent basis, and this misdeclaration, in addition to fata bata imports, is checked. The factors that really affect us is, of course, discount rate, which is now coming down. And the second factor which affects is the HRC prices. Uh, Previous year, we saw both going against us, very high interest rate for most of the year. And on top of that, the HRC kept on declining, putting a lot of pressure on selling quantity. And in spite of demand being higher than the previous year, it was very difficult to compete against imports by pata and material that was cleared without paying anti-dumping duty. This is general information. Again, now revenue was a little bit higher than last year because of increased tonnage. We were able to sell 159,000 tons compared to 113 in the year 2023, which was the most problematic year because our material got stuck at the port because of non-payment by uh, uh, the banks due to restriction imposed by State Bank of Pakistan. The quantity were higher compared to last year, but it could have been a lot high if we could uh, discourage imports under Fatah concession. The difficulties of the steel prices coming down continued in the first quarter as well, where the prices had to be really competitive to move material. And especially the first quarter, a lot of material that was imported uh, uh, in a way that even if FATA restrictions are lifted, or if FATA, the uh, sale tax provision is taken away. So they have imported a lot of material, and that came into the market in 23 once the decision continued to Pata region. Other numbers, the gross profit, of course, has been quite challenging. A little bit higher compared to 23, still not enough to cover the cost, especially when you come down and see very high financial cost. Once you have difficulty in the previous slide, the current ratios are also very challenging. Uh, Return on equity on the negative side. Overall numbers are looking quite um, unimpressive. The year 2024 compared to 23 was better in the sense that we were able to cut our losses compared to the previous years. Still, because of the high interest rate, finance cost is very, very high, and that takes away everything really. And we ended up having negative at the bottom. However, compared to 2023, there is substantial improvement. And coming to the first quarter, the challenge was quite difficult on the basis of the facts I have narrated that a lot of material from Fatah region
came into the market in the first quarter, and it was very, very difficult to sell our material because the prices were very, very challenging. Even after reducing prices by as much as 45,000 rupees per ton, we were having difficulties in selling material because of the fact that the margin Fada people had was very, very big and really challenged us. We hope that the most difficult part is behind us because the material that had been stored is now more or less consumed. The demand is for the local producers is getting better. Uh, we were able to sell only 23,000 tons for the whole quarter. And in the current month, we expect to sell 18 to 20,000 tons, which is substantial improvement from the previous quarter. So hopefully the changes implemented by FBR, where they have mandated submission of pay order instead of a paycheck and instead of a post-dated check, will discourage imports. At least it is the case so far. I hope it continues. So that will help us uh, take back some of the room taken away by these imports. I think that's about all I have to say, and I would now will be glad to answer any questions that you may have. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. So we have some questions from chat box. Uh, what would be expected sales volume for the remaining quarters? I think we are aiming on the yearly basis. We are aiming to sell around 200 to 210,000 tons on the yearly basis. That means that the next quarter, the current quarter, the next 2 quarters, the volume will be higher compared to the previous quarter, substantially higher. Like I said, only 23,000 tons in 3 months, whereas we are already touching 15 for the current month. So we expect to sell uh, higher quantities. And if you want numbers, the balanced quantities will be equally distributed in the 3 quarters. So our aim is to achieve around 200, 210,000 tons on the annual Okay. basis. Okay. Any timeline for the decision on filed case in NTC? At what stage the things are right now? NTC has a certain procedure to follow. They come here, collect data, and they uh, get the numbers from the customs, how much material has come in. And what they have found is that compared to previous years, the amount of material imported under the heading of GALALU, which is gal aluminum, is substantially higher this year compared to previous years. Now, the reason for that is a lot of galvanized material that came, the outer covers were GALALU and they were cleared without anti-dumping being paid. So they have collected the data. They are working on it, but then again, NTC has its own timeline. So we are trying to uh, influence them to expedite the decision. But I think hopefully in the later part of the year, we may have a decision from their end, and hopefully a positive one. Out of 50% importers market share, how much is from Fata Pata and how much is from commercial importers? Uh, the overall share of imports is of the order of 400,000 tons last year. And out of that, around 150,000 tons was Fata Pata. And the balance were commercial importers. And out of that commercial import, reasonable quantity was taken out without paying anti-dumping because they were cleared as Galaloo.
where in reality they were GI. So if you number in terms of numbers, the first time imports were higher than the local production combined. So the volume, import volume was 52% compared to 48% produced by and sold by ISL, Aisha, and Hadith, of course. Okay, what is the company's current fuel mix, and what margins can we expect going forward in this fiscal year? Say that again, please. Company current fuel mix and margins expectation for the remaining fiscal year. अच्छा फ्यूल मिक्स हमारा देखें दिस इज अ री रोलिंग फैसिलिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी हम परचेज करते हैं केई से एंड दैट्स ओनली प्रोडक्ट वी यूज इन टर्म्स ऑफ रनिंग द इक्विपमेंट जो हमारी फर्नेसेस हैं उसमें हम नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं विच वी बाय फ्रॉम एसएसजी so our input is mainly primarily the major bill is of electricity. We consume around 100 units per ton. It's not as high as the melters, but still serious volume, serious quantity. And the gas, which is now quite expensive, we buy from SSGC. And margins expectation for the year. देखिए ओवरऑल ये स्टील बिजनेस है अब ग्रॉस की बात करें तो 10-11 के ऊपर 10-11% typically is the long-term value. In a rising market where HRC prices are rising, you tend to have a better number because of inventory gains. In a declining market, it can be lower than 11%. But on the average, steel mills like ours are okay with 11-12% gross. Quantities are very important. The quantity has to be high. Okay, given sales tax and income tax exemption in Fata Pata, how cheap do they sell CRC of 1 mm? I think the reference price always has been the local producer. अगर आप मार्केट में जाके पता करें ना प्राइस क्या है वो कहेंगे 40 रुपए कम और इतना जुमला होगा 40 अंडर they always refer to local market price and they say we can sell you 40 rupees less 10 rupees less of course they would like to make as much margin as possible अगर हमारी प्राइस विदाउट सेल टैक्स आप देखें तो 2 लाख 5,000 रुपए टन अगर है एक मिली की तो सेल टैक्स के साथ आप ऐड कर लें 18%. अगर 235 240 है इस रेंज में तो दे वुड लाइक टू सेल एट 230 if not 220 because they can sell at 200 and still make money. So ये तो एक such a I mean this is ridiculous that they have a margin of 50,000 rupees and we are competing with them. ये तो they can beat us hands down. तो उनको they don't have any issue of price. The only thing they are watching is जैसे हमने at one stage because we were not able to sell our material reduce the price by about 40,000 rupees 40 to 45,000 rupees per ton and they started selling at 50. Yes, they made at that point they made a little bit of loss, but we made a bigger loss just to cut their sales in the market. Okay, when do you expect the impact of finance cost savings visible in the profitability, and can we expect net profit in the current fiscal year? Again, we hope that the discount rate continues to come down. We hope by the end of the year it is closer to 10%. So, अभी भी as of today, we is still high on the 16%, but we expect that it'll continuously come down, and any percentage that come down really helps us. अगर मैंने आप अब मेरी figure आपने देखी हो पिछली slide में, the cost that is really hurting us is the finance cost. So every rupee we save there will help our bottom line. So अगर आप
हमारा अगर 10% से जीपी है, ग्रॉस मार्जिन है, और हम टर्न अराउंड कर लेते हैं 3-4 दफा ऑन ईयरली बेसिस, तो आई थिंक वी आर नंबर एट द बॉटम विल डेफिनेटली इम्प्रूव। और एम, ऑब्वियसली एम ये है कि यू हैव ब्लैक फिगर एट द एंड ऑफ द डे, और द मेजर फैक्टर फॉर अस इज फाइनेंस कॉस्ट। और हमारे लिए आयशा की मैं बात कर रहा हूँ कि reduction in finance cost is a good omen. That's one thing that really hurts us bad. बाकी में we are fine. Now, conversion cost हमारी बाकी चीजें, quality is fine, but the finance cost really hits us hard. And as the number comes down, we hope to improve our bottom line. एम ये है कि आपने लॉस देखा होगा पहले क्वार्टर में, एम ये है बाय द टाइम वी क्लोज दिस ईयर that should come down, and hopefully at the end of the year we should see some positive number. Aim ये है। Okay, what's the current gas mix from SSGC, including LNG and indigenous? अभी देखें हमारा, अभी तो 30-70 है, अभी तक हमारा 70 LNG बेस 30 है। Okay, how much of 400,000 tons of imports will come back to local producer in 2025? And how much growth does management foresee in the buy of CRC and related products? It all depends on government. They can, if they allow Pata to continue the way they are operating, how can anybody compete with them with sale tax exemption? Agar government wants to compromise local industry for a few traders, it will create havoc for the local industry, and that's why so many industries are closing down. आप अगर ये expect करते हैं कि government will continue with FATA policy and the customs will keep allowing material to come in under misdeclaration, then wish good luck to the local producers. But everybody is realizing that this is highly unfair. And I hope the political pressure that the government so easily succumbs to will stop when they see the big mills bleeding. So it all depends on the government. If they put restriction on pata, or if they control it properly, only allow for their consumption in pata, not allowed to sell in the open market, and misdeclaration is reduced, I think in the current 50% to 52% import should come down to gradually to 30%, and it should go down to 25 in the long run. If you look at historical data, the imports were around 25%, 75% were locals. We cannot stop 100% import. We cannot, because there are grades that we don't produce, there are sizes that we don't, and that will always be imported. But we had a share of about 75%. Now that hopefully currently from 50, it should at least go to 60% next year. Second, overall pie, the size of the pie. It is surprising that last year the overall demand of the country was around 550,000 to 600,000 tons. The year that we are discussing today, the demand was close to 800,000 tons. That's a substantial growth in one year. So even if the overall demand remains same, it does not grow. Only there's a check on Fata and misdeclaration. I think our share should climb from current to at least 60% in the current financial year, which is ongoing. A 15,000 tons volume you have mentioned that has been done was for current month, like November, 20 days, or for that was for October? That is for this is I'm talking about October, November, December का average 15 होगा per Okay, month. and what's the total size of the market as of Total now? si- total size of the market today is around, if yearly basis पे 7 लाख से 8 लाख है.
तो इजीली जो डिमांड है ना ओवरऑल 50,000 टन से ऊपर है पर मंथ। 12,000 50,000 टन पर मंथ से ऊपर है, ऑल GI CRC सब मिला के। And what's the market share of the company? हमारे मार्केट शेयर तो इट्स अराउंड ओनली 20% अराउंड 20% ओवरऑल मार्केट शेयर का है। Okay. Abdul Mukeed, you can please ask your question. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। So, sir, just wanted to ask you on gross margin level. Like you mentioned कि 45,000 टन पर टन से आप लोगों ने प्राइस रिड्यूस की, इसके बाद 10,000 पर टन से आपने प्राइस इंक्रीज भी की, और आई बिलीव करंटली 2,21,000 है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2,21,000 की आपकी लोकल CRC की प्राइस है। HRC की इन्वेंट्री आई बिलीव आपके पास $550 पर टन से ऊपर की होगी। तो कंसिडरिंग आपकी 15,000 पर टन की सेल्स होती है, यानी 50,000 क्वार्टर की, तो हम हम्म, क्या मार्जिन देख सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन किन लेवल पे देख सकते हैं अगर आज की सिचुएशन ही रहती है तो? देखें हमारा अभी देखें हमारा ये होता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि हमारी HRC प्राइस अभी भी उसकी जो एवरेज कॉस्ट है इट इज़ अराउंड 550, but it will come down to around 500 because of the new stock that is coming in, will be priced lower, 525 sorry, every 525 हो जाएगी। तो हमारे ग्रॉस जो है फिर वो स्टार्ट टू इंक्रीज। मेरा ख्याल अली हसन हमारा ग्रॉस इसके बाद 11% के करीब आ जाएगा, वंस वी रीच मार्केट वैल्यूज ऑफ HRC, हमारा जो एवरेज रिड्यूस हो जाएगा तो। सर 11 नहीं होगा, अराउंड 7-8% उस पर भी आ जाए आएगा उस टाइम। अच्छा, और 11 कब तक जाएगा? जब हमारी इन्वेंटरी और सेलिंग प्राइस थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। क्वार्टर नेक्स्ट ये इंक्रीज नेक्स्ट। नेक्स्ट इंक्रीज नेक्स्ट इंक्रीज पे इंशाल्लाह 11 तक आ जाएगा। क्योंकि गॉट इट। हम दो चीज़ें हैं, हम प्राइस इंक्रीज में भी काफ़ी कंजर्वेटिव थे। वजह ये थी कि HRC प्राइस थोड़ी बेहतर हो गई है अभी, लेकिन इसलिए कि इंपोर्ट ना हो जाए एकदम से, तो वी आर कंजर्वेटिव। बट वी नो दैट गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी और हमारी एवरेज HR कम होगा, तो होपफुली 11 तक हो जाएगा। अंडरस्टूड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने मेंशन किया कि जो मिस डिक्लेरेशन है ऑन गैल्वेनाइज इंपोर्ट, उसके लिए आपने NTDC में कंप्लेन भी रजिस्टर्ड की और उस पर वर्किंग भी चल रही है। सो इन द मीन वाइल आर दे अलाउड टू इम्पोर्ट अंडर मिस डिक्लेरेशन, और आर दे करंटली इम्पोर्टिंग अंडर मिस डिक्लेरेशन कोड, या ये सिचुएशन करंटली नहीं हो रही? देखें हो रही है, लेकिन हमारे शोर मचाने से कुछ थोड़ा बहुत रिलक्टेंस जरूर आ रही है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि वी आर एट NTC कंप्लेनिंग, और कस्टम्स को लिखते हैं, उनको कहते हैं भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ऑल्दो यू नो एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम। लेकिन थोड़ा बहुत शोर करने से होपफुली थोड़ा बहुत वी होप दैट अभी से थोड़ी सी ब्रेक लगाना शुरू हो जाएगी। लेकिन यस अभी आ रही है, हो रही है। होपफुली होपफुली इंशाल्लाह। तो सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया कि जो फाटा पाटा है उसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ भी वो ये भी कि पहले आप लोग पहले फाटा पाटा वाले पोस्ट डेटेड चेक देते थे, अब पे ऑर्डर देते हैं। तो जस्ट वांटेड टू जी अंडरस्टैंड, लाइक वो पे ऑर्डर देते हैं तो उसमें भी सेल्स टैक्स की अमाउंट तो ये लोग पे नहीं करते होंगे ना, क्योंकि फाटा पाटा में नहीं तो है ही देखें, exemption। ये मैं जब वो समझना चाह रहा हूँ। हाँ, जब वो मटेरियल लैंड करता है ना, उसकी जो भी CNF प्राइस है उसके ऊपर जो वो पे ऑर्डर लेते हैं वो कंप्लीट सेल टैक्स के लेते हैं, जैसे 18% का, ठीक है, या कोई उसके ओके। ऊपर और कोई ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल 1 या 2% आ, तो ये सेल टैक्स पूरी अमाउंट का वो पहले पोस्ट डेटेड चेक देते थे। उस चेक की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी। और ये क्यों दिए जाते थे? वो इसलिए दिए जाते थे एज पर रूल, उनको ये मटेरियल क्लियर करके PDC एज ए गारंटी दे के मटेरियल लेके चले जाएंगे। देन दे हैड टू सबमिट ए कंप्लीट रिपोर्ट कि इतने हजार टन हमने इंपोर्ट किया, ये लोकल कंजम्पशन थी, यहाँ हमने बेचा, ये सारा हमने इसको क्लियर कर लिया, नाउ हमारा चेक को वापस कर दें। ठीक है, वो वापस भी नहीं, दे डिड नॉट इवन बॉदर टू कम बैक एंड सबमिट द अकाउंट्स, बिकॉज वो PDC वैसे ही जाली होता था।
अब when they are forced to give pay order, now they have to come back with a detail report के इतना मटेरियल हमने 10,000 टन दिया था, इस कस्टमर को हमने बेचा है, ये प्रोडक्ट बेचा है, ये उसकी यील्ड है, और ये हमने एज पर रूल एंड रेगुलेशन कंज्यूम कर दिया फटाफट में, आप हमारा पे ऑर्डर वापस कर लें। Now पे ऑर्डर मीन्स upfront कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो जब उनका कैश आउटफ्लो है तो दे हैव टू कम बैक, और वो आएंगे नहीं क्योंकि वो तो सारा 2 नंबर ही चल रही है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा ये रिलक्टेंस है, बट दे हैव नॉट स्टॉप्ड येट, दे हैव मूव द कोर्ट टू अलाउ देम पीडीसी। वो कहते हैं जी ये तो इतना कैश आउटफ्लो इतना ज्यादा है, स्टील इतना महंगा है, हम कहाँ से इतना अपफ्रंट कैसे दें। तो दे आर फाइटिंग इट आउट एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट proceeding in the court. तो आई डोंट नो, बड़े इंटलेक्चुअल लोग हैं, लेट्स होप के ये पीडीसी वाला जो इम्पैक्ट है कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट को करे जाए। पीपल लाइक आईएमएफ दे शुड फोर्स कि ये जो मिस डिक्लेरेशन है या ये जो सेल टैक्स का अवॉइड करें पेमेंट, ये दैट शुड बी स्टॉप। ओके सर, फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन व्हाट आई अंडरस्टूड के ये वाली चीज़ को अब इन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया होगा थ्रू पे ऑर्डर, बट एज यू मेंशन के इन्होंने बजट से पहले जो माल ज़्यादा मंगवा लिया था वो कंज्यूम हो रहा था एज ऑफ नाउ अक्टूबर नवंबर तक। जी तो जी जस्ट जी जी। वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं कहूँ पिछले 3 महीने की, यानी सितंबर अक्टूबर और नवंबर में कोई इस तरह की इंपोर्ट हुई होगी जो इन्होंने मिस डिक्लेयर की होगी, या उस पर इन्होंने मतलब फाटा पाटा के लिए मंगवाई और लोकली इन्होंने बेच दी हो, कोई इस तरह की इंपोर्ट्स होगी या हाँ अभी तक वो वो नहीं है? देखें, हुआ ये कि इन्होंने काफी सारा मटेरियल मंगा लिया था इन एंटिसिपेशन के शायद ये बंद हो जाए, और राइट। काफी टनेज में मटेरियल आ गया, और फिर बाय द टाइम दैट मटेरियल केम हियर तो पे ऑर्डर का ऑर्डर निकल चुका था, तो ये मटेरियल पोर्ट पे फंस गया। दे वेंट टू द कोर्ट, तो कोर्ट ने उनको कहा कि जो मटेरियल इस डेट से पहले आया हुआ है उसको आप पीडीसी पे छोड़ दें। तो वो मटेरियल काफी निकला जो फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट में आया। अच्छा, फिर इन्होंने इंपोर्ट, कुछ इंपोर्ट बाद में आई, जो कि इस डेट के बाद इंपोर्ट हुई और पोर्ट पे आ गई। पोर्ट में वो क्लियर नहीं हुई, कस्टम ने कहा जी अब पीडीसी दो तो ये क्लियर होगा। तो उन्होंने कुछ ने तो वो क्लियर करा लिया, दैट क्वांटिटी वाज नॉट बिग, क्योंकि वो अपने वाटर्स चेक कर रहे थे कि व्हाट विल कस्टम्स डू, हाउ विल बी एबल टू मैनूवर दिस। तो वो मटेरियल उनका फंस गया। तो कुछ ने तो फुल ड्यूटी फुल सेल टैक्स दे के निकाला, और कुछ का मटेरियल काफी अर्से से फंसा रहा, जो कि अभी भी कोर्ट में वो दे आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट। तो रिलक्टेंस तो है, कुछ चेक तो हुआ है। आई होप इट कंटिन्यूज। होपफुली। अच्छा सर, सॉरी फॉर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। जो एच आर सी आर सी इम्पोर्ट पे 10% ड्यूटी थी जो कि दिसंबर 24 पे एक्सपायर होने वाली है, तो उस पे क्या हम कंटिन्यूशन देख सकते हैं या वो एक्सपायर हो जाएगी? क्योंकि एज पर जो हमारी डिस्कशन है हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यू होगी, सो वांटेड टू मेरा आस्क ख्याल योर। वी होप इट विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ताहिर, थैंक यू सर। थैंक यू। Feroz, you can please ask your question. Assalamu alaikum. Am I audible? यस यस यू आर, प्लीज गो अहेड। जी जी। सर एचआरसी की ऊपर आपका क्या आउटलुक है मूविंग अहेड? असल में दो चीज़ें आपने कि यूएस की पोस्ट इलेक्शन, यानी आपने व्यू शेयर किया कि प्राइसेस विल इंक्रीज एज द डिमांड विल अप्रूव, बट ऑन द अदर हैंड ऑन द चाइना साइड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स भी लिए टू रिवाइव, तो उस पे अगर यूएस में प्राइसेस बढ़ती हैं, चाइना में सबड्यूड ही रहती हैं प्राइसेस, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम इनकैप्सुलेट करें तो आपका व्यू क्या है एचआरसी के ऊपर? नंबर वन। नंबर टू, माय क्वेश्चन इज सर कि अगर आप आईएसएल को भी देखें तो दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। कमोडिटी बिजनेस है प्योर, वी नो कि जो वॉलेटिलिटी कमोडिटी प्राइसेस में है जो पास्ट में भी रही है, तो राइजिंग प्राइसेस इन्वायरमेंट, फॉलिंग प्राइसेस इन्वायरमेंट, तो इसको मिटिगेट किया जा सकता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के हिसाब से। तो उससे उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? वेदर आयशा इज आल्सो अडॉप्टिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, या फिर क्या नंबर ऑफ डेज आप एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से? थर्डली सर, ये पीटीसी वाला मामला आपने जो हाईलाइट किया है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है,
इसमें सर सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से मेजर लिया जाता है इन ऑर्डर टू कर्टेल इट, कोई ना कोई लूप होल या कोई सेकंड ऑप्शंस जो है वो इस तरह के जो इंडस्ट्री है वो एक्सप्लोर करती है और उसको एक्सप्लॉइट फिर भी मजीद करने की कोशिश करती है। तो पे ऑर्डर वाली चीज़ को भी तकरीबन 2 महीने से ऊपर तो हो चुके हैं, और उस पे भी कुछ सुना है कि चीज़ें, यानी इंटरनली सिस्टम के एरर्स कह सकते हैं इसको, उस पे अभी भी हो रही हैं वो चीज़ें। इट्स एन यस द नंबर इफ आई हैव इम्प्रूव, बट स्टिल काफ़ी चीज़ें अभी भी इट्स इवॉल्विंग। सो सर ये 3 क्वेश्चन है मेरे, ब्रॉडली स्पीकिंग। ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमिंग टू एच आर सी में एक तो नया फैक्टर आ गया ट्रम्प का। ट्रम्प इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ स्टील इंडस्ट्री, और उसने अपने कैंपेन में ये कहा था कि मैं आई विल प्रोटेक्ट स्टील इंडस्ट्री एंड दे विल प्रोटेक्ट, और ही विल सर्टेनली डू इट। और उसमें मेन प्रोटेक्शन ये होगा कि चाइना में वैसे ही इतनी ड्यूटी लगी हुई है, और जगह और ड्यूटी लग जाएगी। उससे हमारे ऊपर कुछ हमें फ़ायदा ये होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, तो वो एक्सपोर्ट प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पे चाइना के पास हो सकता है क्वांटिटी और रिडंडेंट हो जाए, उसकी एक्सपोर्ट और डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि अमेरिका जब इंपोर्ट करता है तो ये कंडीशन लगाता है कि चाइना का बेस नहीं होगा। जैसे हम जीआई अमेरिका भेजते हैं, वो कहते हैं चाइना का बेस नहीं होगा, कहीं और का हो। तो वो इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर हैं। अब चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, तो दे नो दैट देयर इंडस्ट्री विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। वो स्टिमुलस वन आफ्टर द अदर दे रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आ नहीं रहा। और आप देख रहे होंगे कि स्टिमुलस आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, एक दिन फ्यूचर बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे नीचे आ जाते हैं फ्यूचर। लेकिन आप अगर गौर से देखें, एच आर सी प्राइस चाइना की बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुई आफ्टर द रिबाउंस। इस वक्त भी 520 से लेके हमारा जो है 520 से लेके 525 से नीचे नहीं है आज भी। मतलब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बढ़ गया, आयरन और बढ़ गया, क्योंकि चाइना की स्टिमुलस का होप थोड़ा सा और स्ट्रांग हो रहा है। वजह यह है कि द पीपल बिलीव चाइना हैज नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज देयर ओन कंजम्पशन। अगर उनकी इंडस्ट्री को सरवाइव करना है, उनको अपनी कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट वो ज़ाहिर है कर सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वर्ल्ड ओवर बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक चाइना विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू इंक्रीज द प्राइसेस, और जो इंडस्ट्री को ब्रेक इवन या लॉस पे चल रही है वो ठीक हो जाए। तो होपफुली चाइना विल फ्रॉम देयर इंटरनल कंजम्पशन दो चीज़ें वो करेगा, एक प्रोडक्शन कम कट करेगा, दूसरा इंसेंटिव बढ़ाएगा। तो एच आर सी के प्राइसेस दे वुड लाइक टू मेंटेन एट 550 समथिंग लाइक दैट। तो we have to wait and see कि if it works. Overall हमारे लिए probably जो bottom है, I think we have seen the back of it. HRC prices 500 से ऊपर रहेंगी, जो एकदम से 475 तक आ गई थी, अब वो probably दोबारा नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा व्यू है। वी कैन बी रॉन्ग, बट एक व्यू है। दूसरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आप यू राइटली पॉइंटेड आउट कि everybody tries, we try to keep inventory as low as possible, to the extent that we sometimes run out of material. Lekin even then it is safer to be out of material. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई भी प्रोड्यूसर ये देखता है कि यार द मार्केट्स फॉर श्योर इज गोइंग टू राइज, तो फिर वो इन्वेंट्री गेन के लिए सम एक्स्ट्रा क्वांटिटीज प्रोक्योर करता है। अभी हम स्टेज में नहीं है, अभी आईएसएल भी एक्स्ट्रा प्रोक्योर नहीं कर रहा है। तीसरा पीडीसी का जो आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारी जो ओवरऑल सेटअप है, that includes the importers, that includes the customs, and that also includes the exporters like China. They facilitate by packing the wrong thing at the top. यहाँ custom वाले look the other way, or the beneficiaries are of course ruthless importers. तो ये तो गेम पाकिस्तान में ना कभी बंद हुई है ना आइंदा बंद होगी। व्हाट वी कैन ट्राई इज मेक इट मोर डिफिकल्ट। तो ऑफ कोर्स अभी भी पीडीसी का मैंने जैसे बताया कि दे आर फाइटिंग इट आउट इन पिशावर हाई कोर्ट कि हमें पीडीसी अलाउ किया जाए, एंड आई एम श्योर पिशावर हाई कोर्ट विल सकम टू द प्रेशर, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रेशर लगाएगी, वो कहेंगे अच्छा जी ठीक है, फिर ये आगे जाएगा।
In the meantime, they'll start importing till it is challenged in the Supreme Court. तो ये पाकिस्तान की रीत है, ये तो you and I know कि it's not very easy. सर एक दो चीजें और पूछनी थी सिर्फ। Sure. सर ये जो आपने इंपोर्ट के नंबर बताए, ये प्राइमरी क्वालिटी है प्योर, या इसमें सेकेंडरी क्वालिटी भी इंक्लूडेड है? देखें, बेसिकली चाइना से जो इंपोर्ट हो रही है, ये सेकेंडरी क्वालिटी भी होती है, प्राइम भी होती है ये, लेकिन जॉब लॉट्स होते हैं वहाँ पे। जितना इंपोर्ट पाकिस्तान में होता है वो जॉब लॉट बेसिस पे होता है। कैसे होता है, किसी फैक्ट्री ने कहा मेरे पास 2,000 टन पड़ा हुआ है, ये रेट है, वो क्वालिटी उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। पाकिस्तान में देखें, आई आई हेट टू एडमिट दिस, पाकिस्तान में क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्राइसेस। लोकल प्रोड्यूसर बेचारे अपनी थिकनेस जो है जिंक की वो स्टैंडर्ड रखते हैं, हर चीज़ क्वालिटी बनाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइस, एंड यूजर विल प्रेफर टू यूज व्हाटएवर इज चीपर अवेलेबल इन द मार्केट। तो पाकिस्तान में एवरीथिंग गोज, जो मटेरियल आता है वो जॉब लॉट्स होते हैं, वो प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, और समटाइम्स रिजेक्टेड लॉट्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट होता है क्योंकि उनके पास इतना प्राइस मार्जिन है कि अगर थोड़ी सी क्वालिटी 19-20 है, वो 2 रुपये कम करके बेच देते हैं, 5 रुपये कम करके बेच देते हैं, स्टिल देखें 50 रुपये का मार्जिन तो एक ड्रीम है ना ट्रेडर के लिए। तो दे नहीं, वुड स्पेंड सम अग्रेड मनी एंड अग्रेड सेल। अग्रेड अग्रेड सर। माय लास्ट क्वेश्चन सर, आपने जैसे कहा कि डिमांड इंप्रूव हो रही है, तो आई व्हाट आई रिकॉल आईएसएल और आयशा स्टील दोनों ने अपने 2020 या 2019 के अकाउंट्स में एग्जैक्टली जो सेक्टर्स हैं, तो अपनी वॉल्यूमेट्रिक सेल्स को बताया था कि किस किस सेक्टर से कितनी ड्राइव होती है। तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, ब्रॉडली स्पीकिंग, किस सेक्टर में आपको नेक्स्ट 2 इयर्स जो है डिमांड साइड पे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? क्योंकि जो अगर मैं पाँच जो आप लोगों ने रिपोर्ट किए थे 2019 और 20 में, एग्रीकल्चर सेक्टर था, कंस्ट्रक्शन था, अप्लायंसेस था, ऑटो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, एंड जनरल इंडस्ट्री। जनरल इंडस्ट्री मींस के रूरल इकोनॉमी में जो भी इसकी कंजम्पशन होती है और एप्लीकेशन होती है। अ, तो वैसे तो सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, कोई स्पेसिफिक एक दो सेक्टर आप हाईलाइट करना चाहें कि जिस पे आपका व्यू है 1-2 साल में डिमांड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर विल गोना substantially improve as compared to the other sectors? Thank you, देखिए, sir. दो 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 चीजें, एक सीआरसी एक जीआई है, ठीक है। सीआरसी इज प्राइमरीली रिलेटेड टू ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव में मैं फिर मोटरसाइकिल भी, रक्षा भी, गाड़ियां भी, और जनरल एप्लीकेशन बहुत थोड़ी होती हैं। तो सीआरसी इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द ऑटो सेक्टर। और मोटरसाइकिल्स, जो आप ऑटो एटलस होंडा के देखें नंबर्स, तो दे आर इम्प्रूविंग, और गाड़ियों के numbers slightly better. Up white goods are also improving a little bit in terms of numbers. So there is a certain improvement in demand. अभी भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, वो जो किस्तों के सिस्टम अभी शुरू नहीं हुए, बट देर इज एंटिसिपेशन। आप देखते होंगे कि बाज बैंक्स और दूसरे कंपनियां जो हैं वो इंटरेस्ट को सबड्यू करके दूसरे पैकेज के थ्रू बेच रही हैं। So there is a general understanding that interest rates are going to come down, and that will have direct impact on two-wheelers, three-wheelers, and four-wheelers. तो ये जनरली पॉजिटिविटी इसमें नज़र आ रही है, और नंबर्स भी बेहतर हैं, और सीआरसी की सेल्स थोड़ी इम्प्रूव है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब आ जाए अब जीआई। जीआई इज ए मच वाइडर अप्लाइड मटेरियल। इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन अभी भी पाकिस्तान में स्लो है। कंस्ट्रक्शन में कहाँ जाता है हमारा मटेरियल, अगर आप छोटे एप्लीकेशन देखें, जो खिड़कियाँ दरवाजे पंजाब में बनते हैं वो जीआई के बनते हैं, चौखाटें बनती हैं। और ये जब कंस्ट्रक्शन बूम आता है तो ये डायरेक्टली कंजम्पशन बढ़ती है। बाकी इसका एप्लीकेशन वाइट गुड्स वगैरह में इधर थोड़ा बहुत होता है, वो थोड़ा बेहतर हो रहा है। लेकिन एक एग्रीकल्चर इनकम से भी इनडायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अगर बेहतर होती है तो वो जो बक्से बनते हैं गेहूं स्टोरेज के और दूसरी जनरल एप्लीकेशन के, वो काफ़ी क्वांटिटी में फिर बिकना शुरू हो जाते हैं। तो जीआई रिफ्लेक्ट्स जनरल इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी, जो कि कैन बी रिलेटेड टू बेहतर फसल, हायर कंस्ट्रक्शंस। और जीआई इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ जनरल इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी, जो कि अभी ऐसी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही।
there is a sense, there is certain feeling in the air that things are getting better, primarily because discount rate is coming down. जब वो कम होता है तो फिर हर चीज हिलजुल शुरू हो जाती है. तो let's hope things get better. Must appreciate, sir. Thank you, Tahir. I think this is it from the Q&A session. अब्दुल मुकीर, आपका क्वेश्चन है कोई? यस, इफ यू कैन प्लीज अलाउ। जी जी। तो सर, आपने नंबर मेंशन किया, लाइक आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 लाख से 2,10,000 टन पूरे साल की। तो जस्ट वांटेड टू बाइफरकेट, लाइक पहले क्वार्टर में आप लोगों की 21,000 की सेल्स थी, सेकंड क्वार्टर में आप कह रहे हैं 15,000 मंथली होगी, तो 70,000 टोटल अगर मैं मिलाऊं तो शुरू के 6 महीने की होगी। तो रिमेनिंग 6 मंथ्स में आपको कोई 1,40,000 करने पड़ेंगे, जो कि मंथली 23,000 होते हैं। अब उसमें रमज़ान भी आएगा, बकरीद भी आएगा। सो वुड यू बी एबल टू डू दैट नंबर, लाइक अगर 23,000 आप महीने का करते हैं जैन टू जून में, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड नंबर, बट कैन वी अचीव आप दैट नंबर? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप दो चीज़ें हैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वी हैव डन नंबर्स ऑफ 40,000 ऑल्सो पर मंथ. हमने वी राइट। हैव सोल्ड अप टू 370,000 टन इन अ ईयर. तो ओवरऑल क्योंकि इकोनॉमी डाउन है तो वी होप दैट वी कैन सेल अराउंड 200,000 टन. ये आप ठीक कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में क्यों हमने ज़्यादा रखा है. एक तो ये वजह है कि पहले क्वार्टर में हमें प्रेशर था पुराने इंपोर्टेड मटेरियल का, और इवन विद रिडक्शन ऑफ प्राइस विच यू विल एग्री कि 45,000 टन पर 45,000 रुपीज पर टन के बावजूद we were not able to move volumes. That also points to certain facts. Whereas now, with a little bit improvement in prices, the material has started to move. और क्योंकि जब हम देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त कितना मटेरियल है, और अगर इंपोर्ट जो है वो कंट्रोल रहती है, तो हमारी डिमांड पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार टन पर मंथ है, पर मंथ. तो अगर हम 23,000 टन उसमें से एम कर रहे हैं, दैट इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑल्सो. ये 2 लाख 10 में मैं एक्सपोर्ट भी डाल दूँ, तो आई थिंक दीज नंबर्स आर अचीवेबल. ओके, यस, आई थिंक एक्सपोर्ट्स इंक्लूड करके डेफिनेटली। तो सर, आपने एक और चीज़ मेंशन की, सीआरसी की डिमांड मेनली मोटरसाइकिल सेगमेंट से आती है। जस्ट मैंने एक रफ नंबर किए, इफ़ यू कैन फर्दर करेक्ट मी, लाइक मोटरसाइकिल की डिमांड जो एक्सपेक्टेड है लाइक 1.5 मिलियन यूनिट्स है, और एक मोटरसाइकिल में आई बिलीव 25 केजी ऑफ सीआरसी यूज़ होता होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टोटल। आप करीब हैं, 35 केजी लगा लें, दैट इज मोर एक्यूरेट. 35 केजी, ओके, 35 से 40 केजी होता है. ओके, 35 से 40 केजी होता है, तो आई थिंक जो मोटरसाइकिल सेगमेंट है उससे टोटल डिमांड जो जनरेट होगी वो लाइक 45 to 50,000 टन होगी। एंड यू हम्म. मेंशन कि दिस इज द वन ऑफ द मेन ड्राइविंग सेगमेंट फॉर सीआरसी, लाइक सीआरसी की हम्म. मार्केट बहुत बड़ी है, सिर्फ 50,000 यहाँ से आ रहा है, तो बाकी मतलब किस सेगमेंट से आ रहा होगा? लेकिन आप इस, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो वी स्टार्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स. श्योर। मोटरसाइकिल्स के बाद थ्री व्हीलर्स, रिक्शा. ओके। ठीक है. उसके राइट। बाद हम ट्रैक्टर्स, क्योंकि ट्रैक्टर लोकल बन रहे हैं. ठीक है. उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता लेकिन मोटा होता है, तो उसमें केजी थोड़ी ज़्यादा होती है. देन जो जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं, इसके काफ़ी सारे पार्ट लोकल फैब्रिकेट होते हैं, लेकिन जो आउटर स्किन है ना गाड़ियों की, वो तो इम्पोर्ट हो रही है. वो पाकिस्तान में नहीं बनती, ना बना सकते हैं. तो वो छोड़ के जो इंटरनल पार्ट्स हैं जिसमें कॉस्मेटिक इफेक्ट इज नॉट दैट बिग, वो पाकिस्तान में बनते हैं. और अभी ऑटोमोटिव सेक्टर वाले इम्प्रूवमेंट इन ग्रेड्स इसके ऊपर जा रहे हैं, जो हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो local share in automotive industry is will improve, especially क्योंकि यहाँ पे क्योंकि specific quality requirement है. यहाँ imports या तो वो खुद करेंगे बाहर जापान से, या वो हमारा local producer से इस्तेमाल करेंगे. तो as the organized sector improves, जिसमें ये सारे सारे आ जाते हैं, हमारी लोकल कंजम्पशन बढ़ जाएगी. वजह ये है कि वो चाइना का मटेरियल इधर का, वो उनको लेते हुए थोड़ा सा डर होता है कि स्पेसिफिकेशन ना हो. तो ये क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तो इन सारी एप्लीकेशन से हमें बेहतरीन नजर आती Got it, sir. Thank you so much. Thank you so much for very detailed answer. Thank you so much, Tahir, for allowing me for so long. Thank you.
This is it. I think we have a question from Asif Jalil. Can you mention per unit usage of CRC in cars, tractors, and three wheelers? देखिए मोटरसाइकिल का तो ऑफहैंड मुझे याद है कि इट इज़ 35-45 डिपेंडिंग ऑन विच मोटरसाइकिल मॉडल यू आर वर्किंग। बाकी जो थ्री व्हीलर्स में है प्रॉब्ली ये पर ट्रैक्टर आई मे बी रॉन्ग है 500 से 600 केजी लगता है जो उनका कवर है साइड फेंडर्स हैं ये सब मिला के। तो गाड़ियों का कहना मुश्किल है क्योंकि बाज़ गाड़ियों में लोकल इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो लोकल बन रहे हैं बाज़ अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। तो जो गाड़ियों में है उसका आई वुड हेसिटेट टू गिव यू एन नंबर बिकॉज आई रियली डोंट नो सो फार। उसमें ये मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नीचे जो बेस है या साइड इनसाइड डोर्स हैं इनसाइड डोर्स हैं वो सब लोकल बनते हैं। लेकिन स्किन जो है बाहर से आ रही है तो आई आई थिंक ये इट्स अ गुड क्वेश्चन आई नीड टू डू मोर वर्क ऑन इट। डिफिकल्ट इसलिए कि हमें वही बताते नहीं है कि कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है क्या हो रहा है तो हमें फिर वेंडर्स के थ्रू ये डाटा जमा करना हो। लेकिन वॉल्यूम उसका इन टर्म्स ऑफ टनेज is probably not bigger than the two and three wheelers combined. ये हमारा जनरल इम्प्रेशन है। Can you hear me? Yeah. Okay. So with this, we conclude this briefing. Dr. Saab, your closing remarks, please. The previous year has been, and the year before that, very difficult. We hope and we feel that the worst is behind us, and we probably will move on to more same numbers in future. Let's hope that economy keeps moving. Let's hope the interest rate continues to come down, and let's hope कि हमारे जो policy makers हैं, they understand that to support local industries to support employment. और ये अगर वो नहीं सोचेंगे, तो I think it'll be a total loss from Pakistan point of view. All right. Thank you, everyone, for joining us today for the corporate presentation of Aisha Steel. Thank you, Dr. Saab. With this, Thank we you. close this briefing. Thank you. Thank you. Thank you.